Hello everyone and welcome to another lecture of APS Old Cantt, and today we are going to read about the QBASIC. As we are running in QBASIC and we have to read about the QBASIC softwares. So today we are with the elements of QBASIC. Okay, in last chapter I have told you about the last topic. I have told you about the languages, what are the language and what is the use of computer language, type of computer language. So these are all the things we have learned so far. And now today what we have to study? From today we have to study about QBASIC. So in QBASIC, as I told you earlier about the QBASIC, invention of QBASIC and all other things. Today what we have to read? We have to read about the elements of QBASIC. So we have these five elements in a QBASIC, which are, just a second beta, just a second. Now it's perfectly visible to you. Now what we have to study? We have to study about these. What Okay, we have to study about these five things. So first of all, character set. A character set consists of the alphabets, both and small and capital letter, numbers, and special characters. Means that these are called your character set. Then the constant. Constant means a fixed value. Constant means fixed value. A value that can be fixed, that can't be changed. This is called a fixed value. Constants that are in the data values in a program that cannot be changed. Cannot be changed means what? Fixed during the program execution. First of all is numeric constant. Numeric constant क्या होता है बेटा? These have decimal points and can be positive or negative. It can be positive or negative. Like this: 8 minus 3 minus 60, 60, and something like that. Now string constant. These constants are made up of letters, special characters, and blank spaces. These can be enclosed by double quotes. For example, Rajesh 355, Sector 65, and Noida, and all these using this double inverted comma called as a string constants. Now the variable. Variable is just opposite of constants. Why? Because constant have fixed value that can't be changed, but the variable are the value that can be changed. Variable are the values that can be changed. A variable is the name of given memory location. So in your computer there are memory. Suppose this is your what? This is your RAM. What? Random access memory. In this RAM there are 1, 2, 3, 4, and a lot. Okay, now here's location number 1, location number 2, location number 3, location number 4, and so on, location number something. Now here what we have to do, the location at which the variable is stored, value is stored, is called variable. This location, okay, this memory location is called variable because in this memory location the index is 1. मतलब कि इस 1 के अंदर क्या है, इस मेमोरी लोकेशन की इंडेक्स क्या है 1, इसका नेम क्या है, नेम है 1, नेम क्या है 1, एंड उसके अंदर डाटा है कुछ भी हो सकता है, मान लो उसके अंदर डाटा है 8। जैसे आपके घर का एड्रेस क्या है, मान लो आपके घर का एड्रेस है 29, ठीक, आपकी एक रोड है, ये दिस इज योर रोड, ROAD, and these are the house number 1, house number 2, house number 3, house number 4, same house number 5, 6, 7, and 8. So one is what? One is your house number. Where is one is house number, and let me say your name is Vivek. Your name is Vivek. Okay. So अगर मैं आपसे बोलूँ कि where Vivek live, विवेक का घर कहाँ पर है, which is the Vivek home, तो आप क्या कहोगे, number 1. Okay, so number 1 is your memory location, number 1 is your location. Same here, number 1 is what? Your location. And 8 is your data. 8 is what? 8 is the data that is stored. I think you guys are getting my points. So यहाँ क्या है, मेमोरी लोकेशन क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया. वेरिएबल क्या हो सकता है आपका, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, क्या करेगा आपके नंबर्स को कंटेन करेगा. क्लियर टू एवरीवन? नाउ
आपके जो डाटा हो सकते हैं दो तरीके का हो सकता है, न्यूमेरिकल वेरिएबल हो सकता है और स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या जो कि क्या होते हैं, लेटर्स एज वेल एज डिजिट्स, क्या कर सकते हैं, डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये अल्फाबेट से बिगन होते हैं। दे शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। ओके, जैसे क्लास इक्वल टू 6, तो क्लास क्या है, क्लास में हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है, सॉरी अल्फाबेटिकल को हम ले सकते हैं। Here is the numeric variable of class 6 which is the value 6 means that class क्या होगा, क्लास इज अ मेमोरी लोकेशन है। क्या है बेटा, ये लोकेशन है। क्या बेटा, लोकेशन है। इस लोकेशन में क्या स्टोर है, इस लोकेशन में 6 स्टोर है। ठीक है, ये एक लोकेशन है क्लास जहाँ पे कौन रहता है, जहाँ पे 6 रहता है। गॉट इट। Now once again, string constant. String constants are used to store the string of characters. Name of the string where the following is the word dollar sign. So it can be contain alphanumeric value, for example, address C55. So as you can see, hyphen 55. So which is what, this is numeric, this is your character, and that is your special character. So whenever you have data mixed up with the character and the special character, then it is known as what, your string variables. And always you, when you ever write a string variable, then we will use this kind of codes. Okay, now the operators. In our QBASIC, we have 5 types of, in which we have read about 3. Okay, operators are the symbol that indicates the type of operations. QBASIC has performed various type of operation on the constant or the variable. For example, 5 plus 6. Okay, so अगर हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया कि 5 plus 6 एक फिक्स वैल्यू दे दी, तो क्या ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, a plus b, तो a plus b क्या है, a is a variable and b is also a variable. Okay, here 5 and 6 are the constant and called as operands, and plus is your operator. Okay, now we have arithmetic operator. In arithmetic operator we have these operator, and you guys know very well about it. First is addition, you know, subtraction, multiplication, division. Integer division means only integer part will be considered. If I write 9 divided by 2, then what I will have, 9 4s are 2 4s are 8, 1 2 5s are 10. So what I have? I have 4.5 here. What I have, division value 4.5. But we will consider only integer part of this. Integer part is 4. So we will note down 4 here. Okay. So integer division means only integer part will be considered here. Okay. Now exponential. Exponential is written as this and means power. If I have to find 3 to the power 2, then it can be written as 3 cap 2, means that 3 cross 3 is equal to 9. Okay. Here 4 cap 3 means that 4 cap 3 means that 4 cube means that 4 cross 4 cross 4 means that 16 cross 4 64. So here we have 64. Now the modulo. Modulo means that a operator that find your remainder. What remainder? If I say 7 mod 3, it means that 3 divided by 7 divided by 3, 3 2 ja 6, the remainder is 1. So this remainder is called your modulo. So it is called your modulo. I think all the operators are clear to you. If it is not, then please rewind the video and watch the video again, and you will get all these points. Okay, I'm not repeating because I'm not in live class. I'm recording my lecture, so you can repeat it everything, and you will get the points. If you have doubt even, then you should ask me in your WhatsApp group or in Teams after watching the video. Don't interrupt in between. Okay, now the relational operator. First of all, one more thing that I wanted to tell you before the lecture, which is that you should watch my video having your notebook and copy copy and paper, because not having copy and paper you won't be able to getting all the points. Now relational operator.
These are used to compare two values of the same type. The result of the value can be the 0 or non-zero. As I told you, if it is equal to no, 3 equal to 3 or not. Yes, it is equal to. So it can be answered as yes or no. So these are the relation operator, and I think you guys know very well about this in mathematics. This is same, equal to, greater than, less than, greater than, less than, equal to. मे बी यू हैव प्रॉब्लम ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज दैट मैं आपसे कहता हूँ बेटा वोट डाल सकते हो कि नहीं। अगर आपकी एज क्या है, अगर आपकी एज 18 प्लस है, यानी आप क्या हो 18, इधर 18 और 18 से ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन व्हाट, देन यू कैन वोट। Okay, so this is greater than or equal to use, and then last is logical operator. In the logical operator we will find the combination of some values, the combination of some values. Okay, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं कि आप 18 से बड़े हो, ठीक, एक तो ये हो गया, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और, एक कंडीशन क्या, कि आपके पास क्या होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, वोटर आईडी, तभी हो तभी आप क्या कर पाओगे, वोट दे सकते हो। तो ये क्या होगा, दो कंडीशन को हमने एक साथ इंप्लीमेंट किया, तो ये क्या कहलाता है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? So in the previous lecture I have told you about the statements. So statements क्या है, कमांड, कमांड को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में कुछ कमांड दी जाती है। इसमें क्या आरएम कमांड की यूज करते हैं रिमार्क्स के लिए, इसका ये सिंटैक्स है। क्लियर कमांड का यूज होता है क्लियर करने के लिए, जो आपने प्रीवियसली प्रोग्राम रन करा रखा है उसके आउटपुट को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लियर कमांड का यूज करते हैं। तो क्या कहते हैं, सीएलएस कमांड भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सीएलएस कमांड भी बोल देते हैं। नाउ द इनपुट कमांड, फॉर द इनपुट कमांड हम क्या लिखेंगे, इनपुट ब्रैकेट वेरिएबल नेम, लाइक input and give the numeric data and the percentage key, give the alphabet and press the enter key. Okay, now the end command to end your program, let command, जब आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कराना हो, let string is used to assign the value to the value or data to a variable. Suppose we have a value let in capital, let a equal to 10, in a it will be stored 10, same as name, it is stored lovely, quite simple. Go to command is used whenever you have several line of code and you wanted to go by jumping some lines. Suppose that you want to jump from this line, you don't want to print 2, so what you will do, you will write go to, then you will write a label. Label can be anything, it can be a b c, your name, it can be anything, but here I am using label, this called label, and then when it search for label, देखो जैसे ही गो टू कमांड को इनकाउंटर करेगा तो क्या करेगा, इसके सामने लेबल लिखा है ना, तो अब देखिएगा प्रोग्राम में लेबल दोबारा कहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ टू लिखा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, देखो यहाँ लेबल लिखा है, तो इसके आगे क्या लिखा है, प्रिंट कंप्यूटर, क्या करेगा, कंप्यूटर्स को ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट है आपका प्रिंट कमांड। प्रिंट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोगों ने प्रिंट को यूज किया है, क्या करता है, जो भी आप लिखोगे उसको क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है उसको क्या करें, डबल कोट्स में आप लिख दीजिए और ये क्या करेगा, उसको आपको मैसेज को प्रिंट करा देगा। आपको सिंपली प्रिंट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, एक ब्लैंक लाइन को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। आफ्टर द वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट, जब प्रिंट के आगे क्या होगा, वेरिएबल, उसको वेरिएबल प्रिंट करा देगा। ओके, सो ये आ गया आपका प्रिंट। नाउ इफ देन कमांड, so in if then command you have to note down if condition then command means that if के अंदर क्या लिखेंगे, हम कंडीशन लिखेंगे, क्या, if जैसे यहाँ पे देखो इसने क्या किया, मार्क्स की वैल्यू को क्या रीड कराया, कितनी वैल्यू, m में, मार्क्स को क्या रीड कराया, m में रीड कराया। इफ m इज ग्रेटर देन 75 देन एडमिट इन साइंस स्ट्रीम, तो क्या होगा, इंड, मतलब क्या, इसने क्या चेक किया, इफ कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या होगा, ये कंडीशन रन होगी। इफ देन इल्स में क्या होता है कि आपकी कंडीशन को चेक करेगा, इफ m इज ग्रेटर देन 75 चेक किया, देन क्या होगा, इसको प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन क्या है, इफ के अंदर जो लिखा है m की वैल्यू 75 है, क्या ये अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट रन होगा। अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, अगर ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स होने पे क्या होगा, ये इल्स वाला पार्ट रन होगा, ये इल्स वाला पार्ट क्या होगा, रन होगा। ये क्या होता है आपका इफ एंड इल्स होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग अ प्रोग्राम which we will see in our next lecture. Okay, so that's all for today. Now it's time for your homework. I am giving you homework, please take a screenshot of it if you are not comfortable to note it down. So here is your homework now.
note down all commands and write example also. This is your homework that you should send me on WhatsApp. You can send me on WhatsApp, but in group only. In group only. Okay. Okay, guys. So that's all for today. So in the next one. Bye, everyone.